Hello, my dear students. Good morning to all. Hope you all are healthy and you all are doing good, excellent, outstanding performance. So till now, we have already studied about the basic physics. That means we solved more numericals about the scalars and vector quantities. Till now, we have game with the quantities, scalar, vector, resultant, directions. Okay. So once again, welcome back to my class UPG Physics summer course at Pragati CBSE integrated classes. So this is our lecture number 9, and today we are going to discuss a new chapter that is motion in a straight line. Okay, so from this lecture we are starting a new chapter. Okay, that chapter will study as a motion in a straight line. Okay, so far we have already studied about what is the different physical quantities, what are the dimensions formula, what are those basic units. Okay, and you guys already studied our 9th class, 9th class, basically 9th class. Already studied about the chapter motion. What are different types of motion, what is accelerations, average velocity, equation of motion, that is graphical representation of motion. Okay, so here we'll discuss about the basic physics and basic applications. Okay, so from this lecture we are starting. Okay, so let's begin the class. So that motion in a straight line is also called as rectilinear motion. Okay, so for this first we understand in the periphery of physics, in the subject of physics, what is mechanics. Okay, so this is a new branch of physics, mechanics. Okay, so mechanics, what is mechanics? So mechanics, we see the object around us and the things are moving and the things are moving. Some things all are these means there are few things which are not moving. Okay, so if I put water in a glass, okay, means the water occupies some space, okay, and it is not moving, but we study some other characteristics of this water, like it is pressing the walls of the glass. Okay, and so that is also one topic, and it is pressing the walls of the glass. So that is also one topic for study. There may be a motion of the particles, means like number one, the water is flowing in a river. Water is flowing in a river. There is a flow. Number two, air is blowing out. Number three, aeroplane is moving in the sky. Okay, this we call motion. Okay, this we call motion. So here we have studied. Here we will discuss the motion in a straight line. Motion. So in this motion, again we study how. Number one, if it is going, suppose it is a marker, okay, and if it is going, okay, means what do you call this changing in position? What do you call this changing in position? Means we call it speed. We call it speed. Then how do you study the speed? That is one study. Okay. When it is less or when it is more. When it is less or when it is more. So which are the quantities involved? Which are the quantities involved? We have developed a science for that. Okay. Means then that was a very wide science. Okay. Again we have forgotten it. Okay. So number one, where there should be change in the speed. Okay, number one is calculation of speed and one is the cause where there is change. In this way, we made many branches of this study about the things around us. All these study where the forces or push is being applied, even if water is not moving in this glass or it is having a push on the wall. So sometimes the push is giving no motion, and sometimes this push is giving a motion like water flowing in the river.
Okay. Then there are changes in the speed. So all these things we have divided or we have classified into certain categories. Okay, here are the categories. That is mechanics. There are the categories, mechanics. And all these comes under the branch of physics, that is mechanics. Okay, means physics have got many branches to study, and we have done, that is almost done, that is measurements, unit measurements, physical quantity, dimensions, scalars and vectors. Okay, so in our physics there are so many branches. Okay, so or now we'll study the mechanics, and then we'll study light, we'll study the waves, we'll study the gravitation, heat, thermodynamics, work, power, energy, etc. So many topics in the physics. Okay, so now what we are studying in mechanics? In mechanics we have classified it. Number one is statics. And number two is the dynamics. Number one is the statics and number two is the dynamics. Okay, so we have classified. Or when the particles or materials is not moving but it is exerting force, at that time what are the rules? Or what are the calculations? All this we will study in the statics. Okay, means not moving but applying forces, that's study, that is statics. Now if the objects are moving, that comes in dynamics. So in the moving material we make our study into two parts. Okay, one is kinematics, another is kinetics. Further, the dynamics are classified into two categories. One is kinematics, another is kinetics. Okay, our kinematics deals with the different quantities. That number one is position, then speed, different quantities, position, speed, then change in speed, what we call, that is acceleration. Then what are the relations between all of them? Okay, here we do not discuss what is the cause of change of the speed. We do not discuss. Here it is kinematics. Okay, why a particle should stop? No, we simply study how much time. That is one quantity time it will take to stop. Okay, if you give its acceleration so much, so how much time it will take to reach top of the building? If you give it certain acceleration, then how much is this change in the speed? Or all these problems we study in kinematics. Both most important, interesting, amazing. Okay, so here kinematics, the quantities, position, speed, acceleration, time. Okay, and then we study the kinetics. Or in pure dynamics, उसको क्या बोलते हैं? Pure dynamics. We go for the cause of. Here we do not discuss the cause, but here we discuss the cause. We go for cause of change in speed. And what is the cause of the change in speed? That is force. We discuss about the force. So in kinetics we study force, and this force is making change in motion. Just I will introduce about the mechanics. Okay, suppose change in motion means the speed is increasing, the speed is decreasing, and it is pressing, and there is a displacement due to forces. So forces are doing so many things in changing the position, changing the speed, and other things. So when force is involved and we are doing our study, that study portion is known as the pure dynamics, and that is called kinetics. Got my point? समझो, just याद रखो branches को. ठीक है? Here the force is involved, and what is the force?
that is cause of or what force or cause of change. So now this only the relations between the position speed. Now this only the relation between position speed acceleration time. Means this is the another part, that is kinematics. Okay, and this is the another part, that is the kinetics. With knowing the cause of motion and without knowing the cause of motion. Without knowing the cause of motion, with knowing the cause of motion. And here another part, that is statics, rest. So now we are going to start our first study, that is kinematics. Then we will go through the kinetics. So statics can rest, real motion. Means the mechanics is the special branch of physics that deals with the study about the rest and motion of a particle. Okay, so here we have started what is motion and what are the relations, what are the different types of motion. That's all we will study in the kinematics. So rest and motion, बच्चों तुम सब लोग ना आप सब लोग 9th में क्लास में पूछ रहे हो what is rest and motion. Rest क्या है? It does not position. It does not position with respect to time and surrounding. A body is said to be rest if its position or its position does not change with respect to time and surrounding. ये तो rest है, ठीक है? Then motion. Motion क्या है? तो ये रेस्ट मोशन के बारे में तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इतना हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हम पॉइंट को सीधे जाएंगे, ठीक है? So suppose this is a marker. Okay, this is a marker. This is pen marker. Okay. Is it in rest or is it in moving? You guys say it is at rest. So the first thing we'll study in physics that actually in this universe or in this nature, nothing is at rest or nothing is at rest. Why? This is a marker. Is it not at a rest? Means the answer is this is my hand, this is my hand, and I am standing on the earth, and earth is rotating. So with the earth, I am rotating, and with me, this marker is rotating, and with me, this marker is rotating. So it is in motion. Okay. So earth is moving around the sun. Okay. But the completely solar system is moving in our galaxy. So in this way, everything in our universe, in our nature is under motion. If everything is in motion, then how do you make our calculations? Okay, so you are always in our study in our kinematics. Okay बच्चों, तो ये जो ब्रांच है इंट्रोडक्शन था, रेस्ट मोशन के बारे में इतना हम डिस्कशन करेंगे, सबको मालूम है, ठीक है? तो हम डायरेक्ट सीधा पॉइंट में जाएंगे. जी मैकेनिक्स का रेस्ट मोशन की फिजिकल क्वांटिटी बहुत यूज होता है, जो स्पीड है. आपको मालूम है, जस्ट मैं फार्मूला मैं डायरेक्ट फार्मूला बोल रहा हूं, ठीक है? आई हैव रिटन इन द फार्मूला. ओके, सो स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला. देन डिस्टेंस दैट इज स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला एक है. देन टाइम का क्या है? टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है? ये तीनों फार्मूला लेकर तुम रेस्ट मोशन चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कर चुके, ठीक है? तो ये देन एक्सीलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, देन मोमेंटम p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, देन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्स, बहुत सारा है, ठीक है? तो ये तीनों जो फार्मूला है, एक सौ फार्मूला तो आप क्या 9th क्लास 10th में मुझे इतना हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? देन already you guys will already study in our 9th 10th class what are different types of motion, that is uniform motion and non uniform motion, rectilinear motion, rotational motion, ठीक है? instantaneous speed, instantaneous velocity. uniform motion क्या है? equal distance in equal interval of time. non uniform unequal distance in equal interval time and vice versa, ठीक है? मैं ये इतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट छोटी छोटी चीज है, याद रखो कॉन्सेप्ट्स. ओके, जन तुम्हारा क्या एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है? और ऐसे भी कैलकुलेट करो, डिस्टेंस दिया है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल s1 प्लस s2 प्लस s3 बाय टोटल टाइम ऑफ जर्नी t1 प्लस t2 प्लस t3. तो इससे बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ठीक है? तो ये सब है. ओके, सो
in our mechanics, you have studied that the static fast kinematics kinetics, ठीक है, ये जो तीनों चीज फॉर्मूला एक जस्ट सिंपल मेथड है और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। ओके, सो हम डायरेक्ट जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये तो सिंपल चीज है सब, स्टैटिक वेलोसिटी ये सब पढ़ा, मैं इतना बात नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, सीधे डायरेक्ट जाता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो इंपॉर्टेंट है। और 11th क्लास हम जब स्टार्ट करेंगे तो जब पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस, आप सभी लोगों को पता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर चुके थे तीनों इक्वेशन मोशन को, ठीक है। वो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव देखेंगे अभी, ठीक है, एनालिटिकल मेथड में। जस्ट प्रॉब्लम नोट डाउन कर लो, ठीक है। देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स से तीनों न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, मैं न्यूमेरिकल्स फिर दूंगा, ठीक है। तो देखो नंबर 1 इक्वेशन ऑफ मोशन में v = u + h, याद आ रहा है v = u + h, याद करो, ठीक है। तो फर्स्ट v = u + h, तो यहां पे देखो जे यहां पे the velocity after certain time, सपोज ये है o है, इनिशियल एक वेलोसिटी स्टार्ट हो, u का इनिशियल वेलोसिटी देन फाइनल वेलोसिटी, उसका टाइम टेकन t है, एक्सीलरेशन ऐसे एक्सेलरेट मींस वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम। ओके, सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन वो एक्सीलरेशन को फॉर्मेशन करना है, क्या एक्सीलरेशन को ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दोनों है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या है, ए है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, याद रखो, बाय टाइम टेकन, ठीक। ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 80 होगा, देन v माइनस, ठीक है। देन क्या करें, ये u + 80 = v लिख पाएंगे, u + 80 = v, ठीक है। देन वी रियलाइज v = u + 80, तो ये क्या है, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे प्रूव करना एनालिटिकल मेथड मींस दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्या है ये फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, दिस इज द रिक्वायर्ड, ओके, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ओके। देन नंबर 2 उसको लेकर हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, ओके। नंबर 2 s = ut + half at², याद आ रहा है ना, s = ut + half at²। यहां पे क्या, डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रैवल को फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u + v बाय एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। यार सपोज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, देन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u + v बाय 2। तो डिस्टेंस ट्रैवल s है, एवरेज वेलोसिटी हम पे पुट कर लो 2 इनटू, ठीक है। तो ये v, और फ्रॉम इक्वेशन 1 v = u + 80, ठीक है। तो u + 80 यहां से पुट कर लो, u + 80, ओके, ये बाय 2 इनटू t, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2u, देन 2u, a u + 2u इनटू t, 2ut, देन a * 80 इनटू t, 80² बाय 2, ठीक है। a + b बाय b, सो a बाय b बाय, और a + b बाय c, सो a बाय c + b बाय c, ऐसे कर लो। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ut 80² बाय 2 बचेगा हाफ 80², तो s = ut + half 80², ठीक है। ये प्रूफ एनालिटिक आप सभी लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ये क्या है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है। तो इसे हमको प्रूव करना है, इसे प्रूव करना एनालिटिकल मेथड में, ओके। सो नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है
बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, ये भी याद रहे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहां पे भी क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, s, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u प्लस v बाय 2 इनटू t। तो ये t हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कैलकुलेट करेंगे, ये v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u बाय a होगा। तो v माइनस u बाय a का पुट करेंगे, तो देखो यहां से हम लिख पाएंगे उसको v प्लस u बाय 2 इनटू v माइनस u बाय 2। ओके, ठीक है, तो सॉरी ये ओके, तो देखो ये s, तो देखो ये 2a b प्लस u इंटू v माइनस, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या जाएगा 2as a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशंस ऑफ द वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। क्या है, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसे प्रूव करना है। और नंबर 4 आता है एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे एस एन का फॉर्मूला, जे u प्लस a बाय 2, u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला आता है, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों लेकर हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर ले। ठीक है, maybe ये notes provides concise notes, don't worry, just solve the more numericals only, okay, and just feel the concept of physics, okay। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम्स पूरा खुद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये तो ठीक है, मेरा ऑलवेज मैं बोलता हूं। ठीक है, the problems numericals, okay। so नंबर 1 देखो, यहां पे हम मतलब v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, then b square equal to u square plus 2as। ठीक है, तो नंबर 1 मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the running and what is the velocity of the jet at takeoff? देखो बच्चों याद रखो, जो सिंपल दो क्वांटिटी दे दिया है, सपोज हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे दिया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, सपोज 3-4 क्वांटिटी दे दिया है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है इक्वेशन, उसको हम सहारा लेते हैं। ठीक है, सहारा लेकर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो याद रखो पूरा बहुत सारा क्वांटिटी है, देखो ये एक्सेलरेशंस, देन ये डिस्टेंस। ठीक है, ये सब दे दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो देखो, तो न्यूमेरिकल्स करो, सॉल्व करो, मैं कर रहा हूं, सॉल्व करो। ठीक है, ओके, देखो यहां पे कुछ क्या क्या गिवन दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन को देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, एंड मैक्स रन 35 सेकंड, मींस s इक्वल टू सॉरी टाइम t इक्वल टू 35 सेकंड दिया है। तो फर्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ, मींस डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो u तो 0 है, तो ये टाइम भी दिया है, मींस डिस्टेंस टाइम रिलेशन s इक्वल टू ut प्लस r at स्क्वायर। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ ये है क्या, मिनिमम लेंथ। ओके, तो s इक्वल टू u 0 है, तो मींस ये 0 हो गया, देन हाफ a 3 t 35 रॉस। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो 35 का स्क्वायर कितना है, तो यहां पे मल्टीप्लाई करके जितना आएगा ये इतना नीचे होगा। ठीक है, सॉल्व करो। ओके, देन क्या पूछा है, जे व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा है ऑफ द जेट टेक ऑफ, ऑफ द जेट टेक ऑफ। तो डायरेक्ट हम क्या, u प्लस at हमारे पास है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, देन u 0 बाय s। ठीक है, देन a क्या है, एक्सेलरेशन 3 इनटू टाइम कितना है 35, तो 3 इनटू 35 कितना है, ये 105 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसे सिंपल, तो हमको ये इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर हम
सारा लेकर हम सॉल्व करेंगे. ओके. Then number 2, an electron traveling with a speed of 5 into 10 to the power 3 meter per second. 5 into 10 to the power 3 meter per second means initial velocity u equal to 5 into 10 to the power 3 meter per seconds. Okay. An electric field with an acceleration of 10 meter per second. Acceleration दे दिया है 10 meter per second square acceleration का. Okay. Then first speed में पूछा है how long will it take for the electron to double its speed? To double its speed. Speed double. ठीक है. तो first how long will it take means हमको टाइम कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो v equal to u plus 18 है. तो t equal to फॉर्मूला क्या है v minus u by e क्योंकि एक्सेलरेशन दे दिया है u है हमारा पास. ठीक है. तो v तो how long it will take the electron to double its speed? जो स्पीड है वो डबल. तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b दे दिया है. ठीक है. u वहां पे कितना है 5 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड. तो उसका डबल हुआ स्पीड. तो b में हम बोलेंगे 2 into 5 into 10 to the power माइनस 5 into 10 to the power 3 एक्सेलरेशन 10. ठीक है. उसको सॉल्व करो 10 to the power 3 ये कम हो जाएगा. ठीक है. ये 5 into 10 माइनस 5 कितना हुआ 5. ओके मींस 5 into 10 to the power 3 by 10. 5 into 10 to the power 3 by 10 to the power 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. तो ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन पुट कर दिया हम 10 to the power. तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power 3 कॉमन है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 into 2. तो यहाँ पे देखो जे an electron is traveling with the speed of 5 into 10 to the power 3 meter per second. Okay, then with the acceleration of 10, how long it will the double its speed? Okay, t. तो ये 10 to the power sorry 10 दे दिया है ना 10 to the power. Okay, so 10 कौन करेंगे तो 10 to the power ये 3. तो ओके. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 दिया है तो ये 10 हो गया q1. तो 5 into ये हो जाएगा माइनस होगा तो 10 to the power 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. तो t हो गया. देन सेकंड बिट व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम. डिस्टेंस s इक्वल टू ut plus r at स्क्वायर. ठीक है. तो ut plus r at स्क्वायर. तो ये u 5 into 10 to the power 3. ओके. देन प्लस टाइम कितना है ये इनटू 5 into 10 to the power 2. देन प्लस r एक्सेलरेशन 10 into 5 into 10 to the power स्क्वायर. ठीक है. उसको ये प्लस मल्टीप्लाई ये प्लस मल्टीप्लाई कर लो देन ऐड करके जो आएगा उतना मीटर होगा डिस्टेंस. ओके. तो इसमें सॉल्व करना है. ओके. देन नंबर 3 क्या है बुलेट ट्रैवलिंग विद a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. मींस क्या ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी. तो u इनिशियल वेलोसिटी कितना है 16 मीटर पर सेकंड. penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. comes to rest means final velocity 0 in 0.4 meter means s डिस्टेंस दे दिया है 0.4 मीटर. ओके. तो फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन. रिटार्डेशन क्या है मालूम है तुमको. रिटार्डेशन वो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. तो देखो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी दे दिया है. ठीक है. तो हम ये s भी दे दिया है हमको t कैलकुलेट करना है. तो t कैलकुलेट करेंगे तो उसका हम एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट. ये कितना एक्सेलरेशन है ये क्या है ये इन द कम्स टू रेस्ट ड्यूरिंग द रिटार्डेशंस. ओके. तो रिटार्डेशन टाइम के लिए तो ड्यूरिंग द रिटार्डेशन हम मींस एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन a इक्वल टू हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ये हम क्या करेंगे मींस s तो हो गया. देन हम टाइम पर टेकन मींस टाइम टेकन हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो तो कैसे आएगा इधर ये 0 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर. ठीक है. b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इनटू 2 इनटू
a into s 0.4 मीटर, दोनों वेलोसिटी दे दिया है, तो क्या हो जाएगा ये -16 means -16 into 60, then 2 into a into 0.4, then a equal to -16 into 60, then 2 into 0.4. ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, इतना क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, खुद सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। हाँ, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा। 11 बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस, ठीक है। देन जो एक्सेलरेशन आएगा, देन टाइम तक हमको कैलकुलेट करना है, तो t इक्वल टू v माइनस u बाय, ठीक है। v u तो है हमारे पास, ये में यहाँ पे जो आएगा पुट करके टाइम निकाल, ठीक है। तो इसी ओके, तो ठीक है बच्चों, इतना न्यूमेरिकल्स में बोल दिया है, और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम निकालो कॉपी, रफ कॉपी में सॉल्व करो, और सॉल्व करके सडनली वो मेरा ग्रुप में डालो, मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, a train starting from rest and moving with a uniform acceleration। देखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, a train starting from rest and moving with a uniform acceleration attains a speed of 90 kilometer per hour, right? 90 kilometer per hour, okay, in 5 minutes। A train starting from rest and moving with a uniform acceleration attains a speed of 90 kilometer per hour in 5 minutes, okay। To find first bit, the acceleration, and second bit, the distance traveled, okay, the distance traveled, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो। देन क्वेश्चन नंबर 2, देखो 90 किलोमीटर पर आवर 1 में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके करो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, एक इनिशियल वेलोसिटी का फाइंड आउट करना है, दे रहा हूं, ठीक है। देखो, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन which stopped in 20 seconds, by applying brakes, okay, to stop. The retardation due to brakes is 1.5 meter per second square, okay, is 1.5 meter, so find the initial velocity, okay। Then question number 3, लिखो, write down, a bullet leaves the barrel of a rifle, with a speed of 30 meter per second, full stop। If the length of the barrel is 0.9 meter, at what rate is the bullet accelerated while in the barrel? At what rate is the bullet accelerated while in the barrel, okay। So solve the 3 numericals, जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करो और डायरेक्ट पोस्ट करो, जल्दी पोस्ट करो, ओके। तो ग्रुप में डालो, और क्या कुछ डाउट है मुझे पूछो, फ्री टू आस्क मी, ओके। सो ओके बच्चों, स्टे एंड ब्लेस्ड, हाँ, टेक केयर, आराम से मुस्कुराए पढ़िए, हाँ, और ऑलवेज कीप स्माइलिंग, अच्छा से पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हाँ, जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो, पूरा मजा आ जाएगा, ओके। So I have appreciation with all are doing excellent, especially in my physics, okay. So see you in the next class, okay. So thank you.